What's going on, guys? Welcome to my vlog. This is Chaitanya Bhutani, lifestyle transformation specialist at frommind2muscle.com. ये मास में ना साला सांस घूमती है. So guys, if you're new here, do not forget to subscribe to the channel and push the bell icon to see future videos. Today's vlog is going to cover reconstruction of my deadlift. So guys, everything from mobilization drills, right technique, biomechanics, everything is covered in this video. So guys, stay tuned and enjoy the rest of the video. सारी धूप हमारी गाड़ी में ही आती है. ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं जाऊंगा साहिल से मिलने. साहिल को कुछ काम था गाड़ी वाड़ी का, तो उसने कहा कि भाई मेरे को ड्रॉप कर दियो दिल्ली तक. लाइक ओके गाइस, सो मीट साहिल. सो साहिल ही, मतलब मैं बता रहा था लोगों को भी कि तूने मुझे जिम से इंट्रोड्यूस किया था. मतलब पहली बार जो जिम बंदा लेके गया था वो तू था. तो तेरे को ऐसा लगा था कभी कि मैं प्रोफेशनल तो नहीं बोलूं, मतलब लाइक आई वुड गो इनटू दिस हार्डकोर, मतलब कि मैं फिटनेस कोच बन जाऊंगा कभी जिंदगी में, ऐसा लगा था? No idea. The guy who wouldn't even take protein just because it's not natural. I never expected that. हम सबसे पहले तो जिम बडीज थे, उसके बाद हम सर्विस सेंटर बडीज बन चुके हैं. तो जब भी किसी की गाड़ी सर्विस पे जाती है तो what the hell यार, मतलब. Is one thing I want you all to do is to make sure whenever you're traveling, just carry a bottle of water with you. क्या होता है ना कि बहुत बार हमें लगता है कि हमें भूख लगी है, बट एक्चुअली वी आर डिहाइड्रेटेड, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव काइंड ऑफ इनकॉर्पोरेटेड इन माय ओन लाइफस्टाइल. जिम में हमने साथ में कितने टाइम से नहीं किया. कितनी बार बोला तू मेरे जिम आ जा. मेरा जिम ये रहा, 1 किलोमीटर भी नहीं है, तू 10 किलोमीटर दूर जाता है यार. डेडिकेशन. ईट वन मोर. गाली मत दे यार ब्लॉग में यार, तू बीस्ट मोड. क्या रीटेक दूंगा मैं दोबारा. रीटेक देगा? अच्छा चलो रीटेक. हाथ तो उठा ना. अरे चाहिए क्या आपको, पहले ही बताओ. कुछ नहीं, बस ऐसे ही हो गया. अब नहीं हट सकता तू. नहीं शक्ल नहीं आनी चाहिए, बता रहा हूँ. शक्ल देखो अब गाइस, शक्ल नहीं आएगी. ठीक है, मैं उस पे वो कुछ गुड़िया डाल दूंगा. हाँ ठीक है. एक नंबर. गाली देता 6 साल छोटा लड़का मुझसे गाली देता है, मतलब बताओ ये इज्जत है क्या? लोग सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पे? अभी बहुत सुंदर सा म्यूजिक बज रहा है पीछे बैकग्राउंड में. एकदम लग रहा है कि वाओ, ये ट्रैफिक जो है, ये ट्रैफिक नहीं है, इट्स अ ब्लिस. So guys, अब मैंने साहिल को तो ड्रॉप कर दिया है. दिल्ली विल्ली में कहीं हूँ मैं, मेरे को पता नहीं. एक बार आया हूँ शायद यहाँ पे. इंटरेस्टिंग. नाउ आई विल गो होम, आई विल हैव अ मील, आई विल इन फैक्ट हैव 2 meals एंड देन टाइम टू डेडलिफ्ट. सो देखेंगे कि मैंने अपना डेडलिफ्ट का फॉर्म कैसे सही किया, और क्या मिस्टेक्स हो रही थी मुझसे पहले, जो बहुत कॉमन है. आई सी एवरी अदर पर्सन इन द जिम जस्ट लाइक wanting to lift heavy ass weights, but their biomechanics are totally screwed up, and you don't want to be in that place, because once you load your spine in like a biomechanically challenged position, you're asking for trouble. So वो हमें बिल्कुल नहीं करना है. हमें ध्यान रखना है अपने फॉर्म का. But there's a very fine line in making sure that your form is right and you're also lifting weights so that you can get that stimulus. एकदम खाली रॉड से प्रैक्टिस करके आपका फॉर्म सही नहीं होगा. सो ऐसी बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं इन माय डेडलिफ्ट सेशन. ओके गाइस, तो अभी बनाएंगे अपना प्री वर्कआउट ड्रिंक. नाउ प्री एंड पोस्ट वर्कआउट का बहुत ज्यादा ना एक लाइक मिथ है और एक गलत फहमी है लोगों को कि यार पोस्ट वर्कआउट प्री वर्कआउट इतना ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि एनाबॉलिक विंडो बहुत बड़ा होता है. हाँ डेफिनेटली एनाबॉलिक विंडो बहुत बड़ा होता है, बट एज कोच गोकू एंड यू नो माय फ्रेंड एंड कोच गोकू सेज, it's not about anabolism, it's about anti-catabolism. So the body grows when it's in a state of calm, which means activation of the activation of the parasympathetic nervous system is really important when it comes to maximizing recovery. अब उस केस में क्या होता है कि अगर आप एक स्ट्रेस में हो, आप स्लीप नहीं ले रहे हो अपनी, इफ यू आर नॉट ईटिंग राइट, in these particular situations, the response of the sympathetic nervous system, which triggers fight or flight response, is like on the higher end. यहाँ पे हमारा गोल जो है, it is to make sure that we activate the PNS, which is the parasympathetic nervous system, on most occasions. Now, if you're someone who has relatively basic goals, peri-workout nutrition won't really matter that much. However, if you have like above average goals, then you have to think above average as well. What I have is, so pre-workout ke liye I have half scoop of protein, 1 scoop essential amino acids, half
sachet collagen, 1 teaspoon salt, it's Himalayan pink salt, and also यहाँ पे बहुत सारे factors भी involved हैं, which means right now I'm really locked into my goal. It's not necessary that पूरे साल भर I am this strict with nutrition कि 1 घंटा पहले ये करना है, 20 मिनट पहले ये करना है, immediately workout खत्म करने के बाद ये करना है. It's डायनामिक इन नेचर. जरूरी नहीं कि मैं कर रहा हूं तो आप भी करो, जरूरी नहीं है कि कोई और एक प्रो बॉडी बिल्डर कर रहा है तो आप भी करो. मेक श्योर दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग, एंड इफ यू आर एवर कंफ्यूज कि यार मैं अपना पेरी वर्कआउट प्रोटोकॉल क्या रखूं, हायर अ कोच. दैट वुड बी द बेस्ट बेट फॉर यू. So by far one of the most common mistakes whenever I see people deadlifting is putting excessive weight on the bar. Now that is something which you absolutely shouldn't do. So उसके बाद क्या होता है कि एक और मिस्टेक होती है whenever we are in the starting position. So for example ये मेरी starting position है जो कि असली में ऐसी नहीं होगी, but for example this is my starting position. The hips rise first because the weight is too much. You apply full pressure like ऐसे करके ये hips पहले ऊपर आ जाती हैं and the thoracic spine bends. That is the number one mistake. What we want is for our hips and the back to open up at the same time. So for example ये. So ideally your feet should represent or replicate your jumping stance, which basically means कि whenever you are trying to jump as high as possible vertically, so you know जितना भी आप width लोगे, this should be like an estimate for you. And as you can see here, the bar is kind of cutting my, obviously figuratively, cutting my feet into half. That's something which I want. I also want to grip the floor, and along with it I want to spread the floor as well to create tension in my feet. That's something which is very very important to get a good starting position. So guys, one more thing which is very important whenever you're deadlifting is your starting position. I read this concept in a book called Becoming a Supple Leopard. अब इस book में Dr. Kelly Starrett ने ये mention किया था कि if you enter the tunnel in a position which is not stable or where you have not created tension, you won't be able to create tension in between the tunnel. And tunnel is obviously representing the whole rep. So अब आपको क्या करना है कि whenever you starting out the rep, you want to make sure that you are starting in a stable position, because otherwise जो आपके muscles है, especially the glutes, which are the most dominant muscles when you're doing a deadlift, or quads while you're exploding up, all of these muscles need to be thoroughly engaged before you start your deadlift. I want to do a hip hinge. I want to reach out for the bar. As soon as I reach out for the bar, I want to grip the bar really tight. I want to pull it apart and then break it into half to create tension from my upper back. But lower body की बात कर रहे हैं, so I want to make sure that my glutes are fired up. Like they have to have that isometric contraction, that voluntary isometric contraction, in order for you to create that stable position. अगर मैं देखूँ अब eccentric portion पे lift के, I want to make sure that I'm breaking my hips a little bit more than what I'm doing with my knees. क्योंकि अगर मैं knees से पहले break करूँगा, so bar knees पे टकराएगी. But what I want to do is I want to do something like this. यहाँ पे जब मैं पहुँच गया, then I can bend with my knees and then keep the weight back again. So guys, to perform a couple of drills to fix our deadlift, we would need some equipment. So here we have a peanut, we have a cobblestone ball. So a cobblestone ball के एक डंडे में ही आया था, so I took it out, and a foam roller. So this is a very basic one. इन तीनों में से कुछ भी if you have, it would do. And even if you don't have to invest in this. Just buy a tennis ball or buy 2 tennis balls. उनको एक sock में डालो, बीच में एक knot बांध दो, so it will kind of replicate a peanut. So guys, the very first mobilization is for your thoracic spine, especially when it comes to thoracic spine extension. So मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि देवदास का डांस कर रहा हूँ. But anyway, what you will need is a peanut, or as I mentioned, 2 tennis balls in a sock. यहाँ पे बीच में knot आ जाएगी. The knot will represent the space of your spine. So क्या करना है हमें कि we have to kind of place this on
each of our vertebral segments, and we want to see if सबसे ज़्यादा tightness कहाँ पे है. We want to stay in one particular spot for around 30 seconds to 1.5 minutes. मैं आपको करके दिखा देता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे middle back पे एकदम रख दिया है, and I will remember all my gods because this is very painful. So I want to tuck my pelvis under, be in that posterior pelvic tilt, hug my shoulders. Oh my god. This is the idea behind this exercise. अभी मैंने एक ही segment किया, वो भी 10-15 सेकंड, और थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहा था मैं ताकि आपको पता लगे कि दर्द कितना होता है इसमें. Now the second exercise which actually helped me the most by any means is the cat camel, but it is the modified cat camel. आपने देखा होगा लोगों को cat camel करते हुए, मतलब गलत सलत, वो पूरा anterior pelvic tilt के साथ ऐसे कर करके उनको लगता है कि they are extending through their thoracic spine. However, that is not correct, because here you want to keep your pelvis in a fairly neutral position and then extend through your upper back. So whenever you're doing the traditional cat camel, maybe your knees are like hip width apart, but here they would be slightly farther away. Here, keeping my pelvis neutral, you want to kind of extend through the upper back. So ये हो गया हमारा camel. Obviously keep your elbows absolutely straight. Do not bend your elbows and get the feeling that you are actually doing the rep. So elbows straight, screw your hands into the ground to create tension. Once you're in that phase, keeping my pelvis fairly neutral, I'm going to extend through my upper back. Always remember, deadlift is not just an exercise, it's a state of mind. क्या बोला है? Quote करेंगे इसको. And it's absolutely fine to talk to yourself whenever you're deadlifting because you need some support. So for the post-workout meal, what I'm having is my leftover collagen, 3 grams of creatine, 2 scoops of essential amino acids, 40 gram glucon-D, and 1 teaspoon of salt. That's something which helps me get back into my parasympathetic state. I'm going to listen to some binaural beats while I have my dinner, and for my dinner I'm having some paneer ki sabji with capsicum, tomatoes and onions. Onions हैं इसमें. प्याज नहीं डाला आपने? And I'm having 2 probiotic dahi, 2 bread slices. Along with this, I'm clubbing 500 mg of magnesium, 2 gram of fish oil. I would not recommend someone to club both of these meals together. I mean, you can, but again, if I see on a scale of more optimal to less optimal, this would be slightly less optimal, because the absorption rate and everything can be kind of an issue. So try karo ki isko space out kar do. Now guys, I'm going to be having my dinner and then I'll be off to meet my friends. Alright guys, so now I'm almost here. अभी दोस्त के यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा चिल विल करेंगे. मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया. While you're doing a deadlift, you always want to make sure that your peripheral nervous system is getting trained. And वो कैसे होगा? Peripheral nervous system training is solely done by doing the movement. So if you think that doing deadlifts are bad for your back, bad for your knees, etc., you would not ever ingrain that movement pattern. So always try karo कि you're doing that movement and ultimately you'll get into the ritual of performing a particular movement. Try following a periodized plan. That is very important. ऐसा नहीं कि हर रोज train कर रहे हो अपने movement को. It should always be in a proper periodized plan. That's something which either you can do on your own or hire a coach for it. Always carry this guys. Sanitizer है कॉलिन की बॉटल में. मस्त काम करता है. 2000 years later. What's up bro? Oh hi. So चांडक भाई ने बहुत जोरदार बात बोली है. क्या बात बोली भाई, तुमने बता. मैंने बोला हम अंदर नहीं बैठेंगे. Why? Why? क्योंकि देखो ऐसे पोस्चर खराब हो जाता है. Correct guys, ये देखो ये चीज मैं समझाना चाह रहा था. चिड़िया उड़, तोता उड़, एरोप्लेन उड़. ए क्या? उड़ दिया इसने, श्रीधर उड़ रहा है. इसने उड़ा, उसने नहीं उड़ा है भाई. इसने उसका उड़ाया. अभी भी था. हाँ. ये Like करता था ना. when you miss ना, मैं नहीं मार सकता. Done? मेरे को एक गेम जीतना था. I'm fine with it. चिप्स की जगह मूंग दाल खा रहा हूँ. So that is healthier option. ठीक है. मैं बियर बॉटल की जगह ग्लास में पी रहा हूँ. That's also healthier. How is that healthier? गैस निकल जाता है. 3, 2, 1.
And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. So guys, that's it for the video. Thank you so much for tuning in. If you like the content, if you want to see future videos, do not forget to subscribe to my channel and push the bell icon for future videos. That's it from my side. Chaitanya Bhutani signing out. Peace.